Well, so fluid is anything that flows. ठीक है, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है उसे हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं. Alright, so gases and liquids. Gases और liquids दोनों फ्लो कर सकते हैं और दोनों हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं. अच्छा, when we are discussing fluid mechanics, till a certain limit then we'll be dealing with ideal fluids. Now, what are ideal fluids? which will flow without Of course existing करते हैं to make the assumption so that the learning becomes easy. मतलब सीखना easy हो जाए, इसीलिए हम लोग ideal fluids से डील करते हैं. So what do you mean by ideal fluids? Ideal fluids किसे बोला जाता है? जैसे incompressible. अच्छा. So actually we'll be dealing more properly in saying mostly with liquids. Okay. Fluids में हम लोग gases उतना deal नहीं करेंगे. Mostly we'll be dealing with liquids. So it is So better ideal fluids to are write like it fluids as that flow in ideal one liquids. Ideal liquid. So वो क्या है? Which is incompressible and non-viscous. Non-viscous. Incompressible and non-viscous. मतलब what do you mean by incompressible and non-viscous? Incompressible का मतलब है कि जिसको अंडर प्रेशर हम लोग क्या नहीं कर सकते, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करवा सकते. अंडर प्रेशर उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता. ठीक है, मतलब उसका बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट है. समझ में आया? बल्क कंप्रेसिबिलिटी 0 है, बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट है. दैट इज व्हाट यू कॉल क्या? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नॉन विस्कस. अच्छा, इनकम्प्रेसिबिलिटी का और एक कांसेप्ट है. और एक कांसेप्ट क्या है? The other concept is if you go with the depth of the liquid, the density of the liquid won't change. अगर ये compressible होता, हाँ compressible अगर होता, तो अगर हम लोग नीचे जाते, लिक्विड में नीचे जाते, तो डेंसिटी क्या होता? बढ़ जाता है. So actual real life में यही होता है. When हम लोग ocean floor के नीचे जाते हैं, मतलब ocean के नीचे जाते हैं, when we go down into a ocean, जितना हम लोग नीचे जाते हैं, उतना क्या होता है? वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है. उतना प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पर उतना डेंसिटी भी बढ़ जाता है. The density also increases. मैंने pressure is directly proportional to density. Pressure is Directly proportional to ना, density. हाँ, माने obviously for compressible liquids fluids. अच्छा, But sir, why can I jolly to at least? हाँ, because intermolecular space तो अच्छे. Liquid माने the intermolecular space is not least, right? না আই বলছি যে তুমি ওশানের নিচে যাও বা কোন একটা ওশানের নিচে তো জলই আছে, তো ওটাতে যদি তুমি একটা বাকেটের মধ্যে থাকো, হাউ উইল দ্যাট এক্সিস্ট? It's not about the taking the liquid out in the bucket. তুমি যদি বাকেটে করে লিকুইডটা নিয়েই চলে আসো, তাহলে কি প্রেসারটা আর এক্সিস্ট করছে ওর উপর? না, তাহলে যা ডেন্সিটি ছিল, মানে উপরে যা ডেন্সিটি ওয়াটারের মধ্যে সেটাই পাবে. When you keep it under pressure, তখনই ডেন্সিটিটা বাড়বে, otherwise for incompressible liquids. Well, next is non-viscous. What do you mean by non-viscous? viscosity মানে फ्रिक्शन ड्यू टू लेयर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं. एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा या फ्लूइड रेजिस्टेंस नहीं होगा. फ्लूइड में से फ्लो करना easy हाँ इजी नहीं, मतलब फ्री होगा. so intermolecular space हाँ राइट. नहीं मतलब सपोर्ट सप्लाई कितना भी हो, हम लोग उसको नॉन फॉर द टाइमिंग नॉन विस्कस पढ़ेंगे. बट आफ्टर द विस्कोसिटी किक्स इन, तब हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे, नॉट बिफोर दैट. उसके पहले विस्कोसिटी डिस्कस नहीं होगा. ठीक है. सो फर्स्ट विल बी स्टडीइंग लिक्विड्स एट रेस्ट. पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, देयर विल बी लिक्विड्स एट रेस्ट. Liquids at rest. In many of the books, you might find this chapter named as hydrostatics. In many of the books, you might find this chapter named as hydrostatics. Hydrostatics का नाम में लिखा हुआ होता है, which means water at rest. ठीक है. लेकिन सिर्फ water नहीं, कोई भी liquid के लिए हम लोग ये concept apply कर सकते हैं. We can apply this concept. ठीक है. Whatever we are learning over here. So the first thing we'll be learning is density. Density किसे बोला है? कितना जगह में कितना Divided by Right. Mass per unit volume. Area नहीं. Area किसने बोला? Area नहीं.
mass per unit volume. जल्दी से write this down quickly. Density is equal to mass per unit volume. Density को हम लोग d या rho से डिनोट कर सकते हैं. Mass is m and volume is v. So SI unit of density क्या है? मीटर Is kilogram per meter cube. And CGS unit ग्राम सेंटीमीटर is gram per centimeter cube. Now listen, since this chapter will mostly deal with water, so what will happen is for water you need to remember these values of density. For water at 4 degrees Celsius, density is 1000 kilogram per meter cube or 1 gram per centimeter cube. ये याद रखना है हम लोगों को, ये बहुत जगह में काम में आएगा, ये याद रखना है. और एक चीज का डेंसिटी याद रखना है, लेकिन विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. उसके बाद हाँ, वेलकम टू इट. Now the next thing you need to remember is relative density. Relative density or specific gravity. This specific gravity, the name specific gravity is a misnomer. Mane, there is no name-wise significance. Relative density শুনলে বোঝা যাচ্ছে যে it has something to do with density, but specific gravity শুনে কি মনে হচ্ছে it has got something to do with gravity, right? So এখানে gravity কে নিয়ে কিছু নেই. Relative density doesn't depend on gravity. Relative density gravity এর উপর depend করে না. But still we call it specific gravity. There is a reason. The reason is when the work with all these fluids at rest were going on, we found that they depend on the acceleration due to gravity. Okay? If there is no acceleration due to gravity, there is something called buoyant force which will not exist. Okay? That is why they related this with specific gravity. Why? Because with respect to water. Specific means with respect to some standard quantity. Okay? So with respect to water, how much is the weight of any other object? And that's why they named it as specific gravity initially. But afterwards we found that it's a better name is a relative density. But by the time we thought the name, the use of this quantity was so humongous that you couldn't eliminate the name. Name to eliminate for it. Yes? So you call it relative density or specific gravity, anything. Now the question is, what is it? Go ahead. Anyone? Relative density? Kiska ratio? It is the ratio of density of any substance any substance by density of water at 4 degrees Celsius. Density of any substance by density of water at 4 degrees Celsius. Density of any substance by density of water at 4 degrees Celsius. Is that clear? Density of any substance by density of water at 4 degrees Celsius. Density of water at 4 degrees Celsius. This is what we call relative density. So what will be the SI unit of relative density? Zero. Dimensionless. Dimensionless quantity. It is a ratio of two similar quantities. It will have no dimensions. Now, one important thing. In CGS unit, what is the density of water? How much value? 1, right? So in CGS system, density of water अगर 1 हो जाएगा, तो relative density और actual density of the substance are right same. They will be identical. ठीक है? So in CGS system, density of water is 1 gram per centimeter cube. Hence, the density of the substance, hence the density of the substance is equal to relative density. Relative density. ठीक है? पर याद रखना डेंसिटी अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो यूनिट हम लोग को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा.
लेकिन रिलेटिव डेंसिटी अगर मेंशन करेंगे तो no तो हम यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है। So was there any special reason for taking water? তার কারণটা হচ্ছে amongst all the different liquids and the solids which can float in water, water was the heaviest. তো সেজন্য ওয়াটারের ডেনসিটিটাকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডেনসিটি অফ ওয়াটার ইজ ম্যাক্সিমাম। তার থেকে অন্য টেম্পারেচারে গেলে ডেনসিটিটা কমে যায় সবসময়, ঠিক আছে? লোয়ারে গেলে ওটা কমে যায়, হায়ারে গেলে ডেনসিটি it decreases. So is the concept of density, relative density clear to all of you? Acha, see, when we are mentioning this density of any substance by density of water, you can also write this as mass of the substance by mass of equal volume of water. Equal volume of water. You understand why? Because density is what? Mass by volume, right? So if I take the volume same for both of them, then the volume and volume will get cancelled, and it will be remaining only mass of the first body by mass of the second body. मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. So it will be m1 by v of the first body by m2 by v of the second body. So if I cancel out volume, I'll write m1 by. But when I'm writing this, I did not mention that the volume was taken equal. That's why I wrote mass of equal volume of water. मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मास उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का जितना मास होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे. That will give us the relative density. So you can also, you know, मास के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से वेट हो जाता है? g, right? So तुम यहाँ पर g मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम ये भी बोल सकते हो कि weight of a substance by weight of equal volume of water. So मास की जगह में अगर weight हम लोग लिखते हैं तब भी कोई wrong नहीं होगा. It will be exactly same. Clear? Clear to all of you? Density, relative density क्या होता है? Fair enough. So the next thing you'll be learning is pressure, thrust and pressure. Okay, so what is thrust? No. Right. So say if you have a surface, on the surface you can apply force at any direction you feel like, right? But if you apply a force perpendicular to the surface, exactly perpendicular to the surface, तब उसको नाम दिया जाता है क्या? Thrust is a normal force to the surface. ठीक है? Thrust is a normal force to the surface. Normal means perpendicular force to the surface. Is that clear? The next thing is pressure. What is pressure? Pressure is thrust per unit area. Thrust by area. Pressure is thrust per unit area. Means the force which acts normal to any surface per unit that surface. Now you can clearly understand the area is at the denominator. इसका मतलब क्या है? कि area of contact अगर छोटा होगा, pressure will be large. Area of contact अगर बड़ा होगा, pressure will be. इसीलिए देखना जो हम लोग ट्रेकिंग बैग या कोई भी लगेज बैग जो होता है उसका जो स्ट्रिप्स होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है. क्यों वाइड होता है? द रीजन इज वाइड होगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर विल बी लेस. द सेम थिंग हैपेंस से यू आर कैरिंग अ बैग, से अ वेजिटेबल बैग, से यू आर टेकिंग सम ग्रोसरी होम. ओके, सो अगर वो बैग का जो हैंडल है वो बहुत थिन होता है तब तुम्हारा हाथ में लगता है, बहुत ज्यादा लगता है. बट अगर वो थिक होता है तब इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल टू कैरी. Sometimes some people take their handkerchief out and put it under the handles of the bag and then hold it. क्यों? तो handkerchief क्या करेगा? Increase the surface area and वो pressure तुम्हारा हाथ में घटा देगा. It will decrease the pressure. The same thing happens अगर loose sand है उसके ऊपर से you walk on the sand, your feet will get embedded inside the sand. But if you lie down on the sand, then you'll see you'll not get embedded. उसके अंदर नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि if you lie down, then the surface area will be more and the pressure will be less. Is that clear? पाँव में कुछ
ट्रायंगल बड़ा सा पैन। हाँ राइट, जो स्नो में वॉक करते वक्त हम लोग करते अरे हैं। 3-4 तौड़ी के पैन पे पानी। अरे ওটা গোল ট্রায়াঙ্গেল না प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया लिखे सब लोग। अच्छा, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? और एक बार लिख लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया by area. So it should be, the SI unit is Newton per meter square. ठीक है, Newton per meter square. और obviously Newton per meter square is the SI unit. लेकिन इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है? Pascal. ठीक है, not Pascal, Pascal. ठीक है. So Pascal जो है ये सिर्फ एक ही यूनिट है ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर का बहुत सारा यूनिट है, एक है पास्कल, एक है बार, एक है टॉर, ठीक है। Sometimes they are measured in terms of the height of mercury. तो हम लोग Hg, हाँ सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोलते हैं, सेंटीमीटर ऑफ Hg। सर एटीएम Atmospheres, right? Atmosphere. These are not SI units. These are just units. Okay, these are just units. सिर्फ Pascal SI unit है. बाकी सारा जो है वो units है. They are also used many places. तो interconversion क्या है हम लोग सीखेंगे. पहले हम लोग अच्छा ये रहेगा सब